Good afternoon, everybody. Today I am going to present you a case which will definitely be, I'll show you a lot of signs in this child. This is a child who was 4.5 years of age and got admitted about 2 weeks ago with history of fever. There was only history of fever, and this child came to us with decreased appetite only for 14 days. Now, this is a 4.5-year-old baby. There was no history of any bleeding for any side. Of course, there is a past history that this child got treated for 2 years ago only for 2 months for the ATP. That was the only history. When the child came to us, the child was very pale, as you can see this child. The There was no history of tuberculosis in the family. Now this child I will like to show you basically in this area in this 2025 I will be showing you the signs which are so florid about the rickets. Okay. Now let us see. Now see this child. This is a child who is so pale, who is short statured, and along with the short stature, you will see the signs of the florid signs of the rickets. Now see the wrist joint. When you are seeing the wrist joint, there is a wrist widening which I am seeing in this child, very grossly seen. So the child has got bilateral wrist widening. Child is, as I said earlier, a child is short statured, and again you see this photograph, you see a sulcus here, and in this sulcus, this is called Harrison sulcus. This is because of the weakness of the bones, the attachment of the diaphragm is clearly seen, and that is in the form of a sulcus, and that is called Harrison sulcus. Would you see it? So that is what when the attachment of diaphragm is there, you can closely see. Sulcus is being seen. So this is what one of the important signs of the florid rickets. You noticed short stature, you noticed. Now again I will show you the hyperpigmentation and depigmentation of the hairs. When you see, this is one of the features which you see in the malnutrition. See, you have the areas of depigmentation and hyperpigmentation which you can see in this child. So that is called flax sign. So when you have the flax sign, you have widening of the wrist, short stature, and you could see the Harrison sulcus. Now I would show you another important sign in this child. The child is now sitting, and this is what we see in the books, that is called double malleolus. आपने कभी कभार इतना अच्छा नहीं देखा होगा. Let us see this widening of the, how you find out you roll down your thumb in between the malleolus. इसको ऐसे रोल डाउन करो. इसको जब आप रोल डाउन कर रहे हो, एक फर्रो सा आपको दिखाई फील होता है. दैट इज कॉल्ड डबल मैल्यूलस. ठीक, ये बन रहा है. आइए आप भी आके ये देखिए इधर आओ, आप आके देखो. नाउ इफ यू सी, आप इसको रोल करो, मैल्यूलस को ऊपर से आप इसको रोल करके आइए. हाँ, ऐसे रोल करो. जब आप रोल करते हो इसको डबल, इस पे बीच में एक फर्रो आता है. एज आई सेड, अब बच्चा आपको देख रहे हो शॉर्ट स्टेचर्ड है, इसको मैं लिटाता हूं. लिटाने के बाद में, या नाउ आई विल सी दी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन आई विल डू. एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने पे इसको देखेंगे एनी हेपेटोस्प्लेनोमेगाली इज देयर और नॉट देयर. नाउ आई विल शो यू, आई एम ट्राइंग टू पैल्पेट द स्प्लीन. व्हेन आई एम पैल्पेटिंग द स्प्लीन, this is called spleen, which is measured in the long axis of the spleen. It is not measured in the mid-clavicle line, but in the long axis of the spleen, जिसमें वो grow कर रही है. Now, if I see, as you seeing, this is about 5 to 6 centimeters. Yeah. Now, as you are seeing, this is 3 to 4 centimeters below in the long axis of the spleen, below the costal margin. अब आप liver देखिए. When you are seeing the liver में आपको important चीजें क्या देखनी है?
बताओ भैया, आप बताओ स्पैन कैसे चेक करते हैं? नीचे से ऊपर नहीं जाते, आपको ऊपर से नीचे जाना होता है। आप आइए प्रतीक इधर आओ। अब अपर बॉर्डर हमें देखना है, एंगल ऑफ लुई। एंगल ऑफ लुई इसके नीचे जो होता है वो सेकंड स्पेस होता है। फ्रॉम सेकंड स्पेस यू स्टार्ट परकसिंग एंड व्हेन आई एम परकसिंग यू गो डाउन एंड ट्राई टू सी अगर रेजोनेंट नोट आती है, डल नोट कहाँ पे आती है। यहाँ पे डल हुआ, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। नाउ दिस इज द अपर बॉर्डर। अब आप मेजर कर रहे हो सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। फिफ्थ स्पेस में इसका अपर बॉर्डर है। अपर बॉर्डर इसका यहाँ मिला, लिवर आ रहा था मैंने नीचे, दिस विल बी द टोटल स्पैन। तो दैट इज हाउ यू मेजर। लाइए, हाँ, ऊपर से लेके नीचे तक इसको मेजर कीजिए। हाँ, अब जब आप मेजर कर रहे हैं, दिस इज 11 सेंटीमीटर्स। यस, सी दिस 11 सेंटीमीटर्स। यस, तो ये तो स्पैन मिला आपको। फिफ्थ वन इज अ स्पैन, द अदर थिंग इज दी, आप उसको देखते हो वेदर इट इज फर्म, इट इज हार्ड और इट इज सॉफ्ट इन कंसिस्टेंसी। तो दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। सेकेंड थिंग इज दी, आपको देखना है मार्जिन्स, वेदर इसके मार्जिन जो है सॉफ्ट है, इसके जो है मार्जिन वो आपको फील करके ही पता लगेगा, फोटोग्राफ से पता नहीं लगेगा। स्पैन देखा और उसके बाद में आपको देखना टेंडरनेस। टेंडरनेस इज ऑल्सो फेल्ट। हाँ, टेंडरनेस को देखने के लिए आपको फील करना पड़ेगा। जब आप दबाओगे, पैल्पेट करोगे, तो बच्चा विंस करता है कि नहीं करता है। तो वो आपने देख लिया, इसका जो स्प्लीन है 2 to 3 सेंटीमीटर है। नाउ यू हैव ए चाइल्ड हु इज 4.5 years of age. You could see this child is short stature, right? Now I will discuss with you कि आप मुझे बताएंगे एक बच्चा 4.5 साल का है, which you saw. The height of the child, as I said, it is weight of the child is 10.2 kg. 10.2 कौन सी उम्र में होता है? वेट 9 months के आसपास होता है, 10 month आसपास। 1 साल का बच्चा, तो 10.2 kg is about 1 year. Okay. Height of the child is 86. 86 कौन से इसमें होती है? It's about 2 years, right? 87 is about 2 years. So the height of the child is about 2 years. When I saw the WHO charts, it is less than 3 standard deviation. So weight is also less than 3 standard deviation. Height is also 3 standard deviation. But now the important thing is, इस बच्चे को मैंने आपको दिखाया रिकेट्स है। रिकेट्स में शॉर्ट है बच्चा, तो किस तरह का शॉर्ट स्टेचर हो सकता है? रिकेट्स में शॉर्ट तो है बच्चा, वेट भी शॉर्ट है और हाइट भी इसकी शॉर्ट है, ठीक है ना। नाउ दिस चाइल्ड इज शॉर्ट, इसको मैंने बताया आपको, हाइट इज लेस देन 3 स्टैंडर्ड, वेट ऑफ द चाइल्ड इज लेस देन 3 स्टैंडर्ड। तो वेट फॉर हाइट इसका जो हमने किया, दैट इज बिटवीन -1 to -2। नाउ इफ द चाइल्ड हैज गॉट वेट ऑफ द एज ऑफ द 1 year, हाइट उसका 2 साल। बच्चा कितने साल का है? बच्चा 4.5 साल। नाउ फॉर 4.5 साल का बच्चा छोटा है। नाउ आई शोड यू ऑल द साइंस ऑफ रिकेट्स। On rickets, what kind of short stature is he? You have to explain to me. मैंने इसका अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट पहले किया, ठीक है। अपर सेगमेंट इज 48, लोअर सेगमेंट इज 38, राइट। नाउ अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट रेशियो इज 1.26। ओके, नाउ इफ इट इज 1.26, 4.5 years पे आई थिंक इट इज ऑल राइट, इट इज अबाउट 1.2 के आसपास है। तो इट इज प्रोपोर्शनेट, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट जो है प्रोपोर्शनेट है। Do I expect in the child with rickets this kind of a short stature? So rickets में proportionate short stature ही expected होता है हमारे पास। No, it is not. It is disproportionate short stature. अच्छा। Why? Because बच्चे की जो limbs हैं वो बो हो जाती है। अच्छा। बो हो जाती हैं, तो इसमें क्या है, एक साइन और मेरे को दिखाना था, मैं अभी दिखाऊंगा उस बच्चे को बुला के। इसमें जीनू वेलकम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको जो है बच्चे की, क्योंकि लेग्स मुड़ जाती हैं, तो इसमें क्या होता है कि अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट रेशियो में अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट बढ़ जाती है। दिस इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर। प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर क्या कॉजेज होते हैं? ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, उसके बाद में हाइपोथायरॉयडिज्म। तो दीज आर द कॉजेज। डिस्प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर में होता है कोई स्केलेटल एनोमलीज हो, तो उसमें आपको स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज में आपको मिलेंगे।
आप देखिए बच्चे को, ये देखो नॉक नीज। अब मैं आपको बच्चा खड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये बच्चा, देयर इज इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द नी जॉइंट, सी, एंड नीचे से बढ़ा हुआ है और इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द नी जॉइंट है, दैट इज कॉल्ड नॉक नीज एंड दैट इज कॉल्ड जीनू वेलकम। नाउ यू हैव द फाइंडिंग ऑफ द, तो एज आई सेड इट इज ए डिस्प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर, ठीक है। तो रिकेट्स में एक्सपेक्टेड है, लेकिन हो सकता है इसमें इतनी ज़्यादा बेंडिंग नहीं है, अभी इसको हमें शॉर्ट स्टेचर जो मिला है वो भी प्रोपोर्शनेट आ रहा है, बट दैट डज नॉट मीन कि नहीं होता। मैंने आपसे सवाल किया था शॉर्ट स्टेचर कौन सा होता है, ये पूछा जाता है, इट इज डिस्प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर, ठीक है। नाउ आई टेल यू, इसमें डाइटरी हिस्ट्री इसकी बहुत पुअर थी। डाइटरी हिस्ट्री में इसने क्या किया, वी कैलकुलेटेड दी 24 आवर रिकॉल मेथड से इसका कैलोरीज कैलकुलेट किया, इट वाज 850 कैलोरीज। नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड एट दिस चाइल्ड इज 1350 कैलोरीज। बच्चा 4 साल का है, रादर 1400 कैलोरीज के करीब बच्चे को लेने चाहिए, बच्चा लेता है 850 कैलोरीज, ठीक है। प्रोटीन इसका जो देखोगे तो इस बच्चे का जो है, इसका वेट कितना था आपका, 11 किलो होगा, ठीक है। तो प्रोटीन इसको लेता है बच्चा करीब 15 ग्राम्स, जबकि एक्सपेक्टेड इसमें है अबाउट 20 ग्राम्स। तो प्रोटीन में भी कम है, कैलोरीज भी कम है। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि हमको ये देखना है कि बच्चा जो है रिकेट्स का है, व्हाट कुड बी द कॉजेज ऑफ रिकेट्स एट दिस एज। मैंने आपको प्रोटीन बता दिया, कैलोरीज बता दिया, आपको मैल न्यूट्रिशन के एक फ्लैग साइन भी दिखाया। यू सी यू हैड द एविडेंस ऑफ डीपिगमेंटेशन, नॉर्मल पिगमेंटेशन, राइट। नाउ कीपिंग ऑल दोज थिंग्स इन माइंड, इफ आई आस्क लेट अस से अशोक ये बताओ कि ये और कॉज, ये रिकेट्स तो है, नाउ व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ रिकेट्स इन दिस चाइल्ड। क्या क्या कॉज हो सकते हैं इस बच्चे में, क्या हो सकता है, और व्हाट आर द अदर कॉज ऑफ रिकेट्स यू फाइंड। सर इसमें न्यूट्रिशनल कॉज ही है, अगर न्यूट्रिशनल कॉज मेन है रिकेट्स का इस बच्चे में, न्यूट्रिशन कॉज लगता है, ठीक है ना। तो क्यों, पॉइंट्स इन फेवर। सर इसमें माल न्यूट्रिशन का उसमें एंथ्रोपोमेट्री जा रहा है बच्चा, बिल्कुल ठीक है। हिस्ट्री में भी कम मिल रहा है इसको, आपके साइंस भी मिल रहे हैं, तो आपको लगता है न्यूट्रिशन रिकेट्स है। इफ आई आस्क ऋषभ इज देयर, what are the other causes of rickets you find? One is the main cause is nutritional rickets. Or tell me the other cause of rickets. Sir, if the vitamin D absorption is not happening, sir. देखो मोटी मोटी बात बताओ, एक होता है विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स, विटामिन डी रेजिस्टेंट। नाउ व्हाट हैपेंस इज, आजकल हम क्या करते हैं, व्हेन वी आर गिविंग विटामिन डी, इन आवर टाइम वी यूज्ड टू गिव मेगा डोजेस। Nowadays what is recommended is you give about 2000 to 3000 units Per day, daily. per day for about 90 days. But yes, the problem with this is, what I have been facing is that the compliance of the children is very poor. So what we had been doing also, we calculate the total dose and we try to finish it off in few days time. Of course, it's not written in the books, but yes, slow doses for 2 to 3 months may not be feasible in our setup because the follow-up is very poor. But yes, that is what is our latest recommendation. Now what we do is, when we have finished the dose, when you have given the mega dose, let us say, after 3 to 4 weeks, we get an X-ray chest, X-ray of the rickets done, let's say wrist joints. And supposing there is no healing of the rickets, you have to have the signs of healing, zone of preparatory calcification. So if it is not there, then you repeat the same dose. And after 2 doses, if there is no improvement, then we say it is a vitamin D resistant rickets. Now, if I ask you, what are the other causes of vitamin D resistant rickets? बता सकते हो प्रतीक, आप बताओ, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स का क्या कॉज होता है, मोटे मोटे बात बताओ। हाइपरफॉस्फेटेमिक रिकेट्स एक होता है हाइपोफॉस्फेट, नॉट हाइपरफॉस्फेट, इट इज कॉल्ड फैमिलियल हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट। इस बच्चे में कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है। दूसरी बात है, वो छोटे बच्चों में, थोड़ा छोटे बच्चों में होता है। तो ये बेसिकली इट इज a young child, which is 4.5 years, there is no hype। इसकी मैं रिपोर्ट आपको बताऊंगा, इसमें हमें फॉस्फोरस लो नहीं मिला। सो वन इज ए फैमिलियल हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट। व्हाट कुड बी अदर कॉज? इट कुड बी रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। सो इफ यू हैव टू फाइंड आउट रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, देन द अदर थिंग इज द क्रॉनिक रीनल डिजीज दैट इज लीडिंग ऑन टू द साइंस ऑफ रिकेट्स। उसके लिए हमें कोई इसमें ना तो कोई पहले कोई यूरिनरी कंप्लेंट्स मिली, ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि हमारे पास में व्हाट आर द अदर कॉज ऑफ रिकेट्स। ओके, नाउ अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। वो उसमें भी क्या होगा, आपको रिकेटी चेंजेस मिल सकते हैं,
बट देन दैट इज बायोकेमिकली. मैं आपको बायोकेमिकली अब हमने क्या किया, हाउ विल बी अप्रोच दिस चाइल्ड. हमने इस बच्चे के एक्सरे कराए, एक्सरे ला के आए हो, यू हैव गॉट हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, you have got signs of rickets. There is no history of any previous transfusions, right? So if I ask you, what could be the cause of hepatosplenomegaly in this case? Dashita, आप बताओ. Sir, it could be primarily due to visceroptosis, lax, Very good. and secondary it can Some be other cause. some other cause infection. Now the question is, this child has got, what are the findings we found? Hepatosplenomegaly. This child has got pale. Child has got features of malnutrition, short stature. So what could be the causes? First and foremost, as Ashok said, rightly it could be malnutrition or it could be a nutritional rickets. Now for nutritional rickets, other causes we have discussed. Now I was asking in the examination, when you get a history case of a rickets, you can sometimes have hepatosplenomegaly also. So don't get swayed that this hepatosplenomegaly could be another cause. It could be. But as rightly the principle is, you have to find out the common cause. So as she said rightly, that it is hepatosplenomegaly because of visceroptosis. Because of visceroptosis, you are finding that they have gone down. So hepatosplenomegaly could be there. What could be other causes? There could be many causes. There could be many causes. But here, since there is no history, you have to have many causes. But I am not going to those details. It could be hemolytic anemia. It could be tuberculosis. There was a history that 2 years ago, this child was treated for tuberculosis for about 2 months, right? So I have to find out whether the element of tuberculosis is still left behind or not, which we did some investigation. I'll tell you. We have done the X-ray chest of this child, which is normal. We got the CB nat of this child, which is normal. Then we have the other biochemical finding. Let me just talk to. Hemoglobin of this child was 9 gram%. Calcium of this child is 9 milligram. Alkaline phosphatase of this child is 1516, which is very high. Okay. And the phosphorus of this child is about 4. So 4 is 4 and then it is 9. So what happens in the nutritional rickets is, we have sent the sample for vitamin D also. We have not yet got the report. So we will get the report, because if it is less than 20, then we say that the child has got vitamin D deficiency. But based on these findings, if the alkaline phosphatase is raised, you have a almost normal calcium. A possibility with all this thing could be nutritional rickets, right? Now what, I'll show you the X-rays. Now three things you always keep in mind: fraying, flaying and cupping. Okay. Now it is all, what do you mean frayed? This is all frayed. Frayed का क्या मतलब होता है? बिखर गया. It is flayed, it is frayed, and there is cupping. Cupping is mainly seen in the lower end of the ulna. See this good cupping. नजर आ रहा है आपको? See, this is very good cupping. So you have got fraying, flaying and cupping. So this is what is the picture of the rickets in the picture of radiological evidence of rickets, on the which you could see so gross. अब हमने इसका ये भी किया था, ऑस्टियोपीनिया है. आपके पास सेम पिक्चर आपको नी जॉइंट में मिल रहा है. ठीक है, आप बहुत ज्यादा फ्रेड है, फ्लेड है, इसमें आपको कपिंग नहीं मिल रहा. ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट यू आर सीइंग इन दी नी जॉइंट. चलिए, तो ये आपको रेडियोलॉजिकल कॉज ऑफ रिकेट्स आपको पता लग गया. ठीक है. नाउ व्हाट आई वांट टू से, कि मैं इस बच्चे को की पॉइंट्स इसमें क्या क्या मिले आपको. यू हैव ए शॉर्ट स्टेचर, which is up till now it is proportionate. What is the other key point? You have the anemia, 9 gram hemoglobin, poor history, signs of malnutrition, so it looks like more nutritional. And the third thing is the so gross findings of the, आपको मैंने सब दिखा दिया, ये सारे के सारे. What is Harrison sulcus, वो भी दिखाया. So these are the pictures of the rickets. Now with the hepatosplenomegaly, as I said, it could be visceroptosis. Yes, I rightly said, since the child was treated earlier for tuberculosis, I must get the X-ray chest. X-ray chest इसका देखिए, X-ray chest इसका बच्चे का नॉर्मल आया था. हमने इसका CB नेट भी भेजा है. देयर इज नो लीजन, पैरेन्काइमल लीजन नहीं मिल रहा. इसके बाद हमने इसका CB नेट कराया, उसमें नॉर्मल आया. So if this child has got no evidence of any tuberculosis, so most likely this is a case with the nutritional rickets, और उसमें visceroptosis हो रहा है. So this is how
you will go about. अब क्या करेंगे, मैंने आपको ट्रीटमेंट भी बता दिया कि आपको जो है हम इसको मेगाडोज देते हैं. Newer regime is that you give every day for 90 days, right? And then you try to see the calcification बच्चे में appear हुआ कि नहीं हुआ. Then only after 2 megadoses, if the child, there is no evidence of any healing, then only we say that this could be a case of a vitamin D resistant. That is all for today. Is it okay? Any questions anybody wants to ask? Any questions? Rishabh, you have any question? You don't have any question? Sir, why is the STOS regimen is stopped nowadays, sir? Why is it? That is called new regime, which you said. Yes, sir. नहीं, न्यू regime is 2000 units वाला. Yes, sir. वो बात अच्छा है, लेकिन उसमें क्या है, they are saying that hypervitaminosis D का पिक्चर ना हो. लेकिन हमारे सेटअप में ये देखा गया है, in the Indian setup, you have to give the 2000 units per day for 3 months, and you don't find the compliance is so poor that they don't come. कई बार क्या होता है, when the compliance is very poor, sometimes we even give injection to the baby because they may not come again. So we have been using the injections. But now lately this has come. But I gave you the advantages and the disadvantages. They say that hypervitaminosis may be there if you give the mega dose of the vitamin D. But the question is, if we don't give the vitamin D mega dose, they don't come. They don't come for 3 months. They have other problems at home. So poverty is main thing. So they may not come. They have other problems, family problems. So I would still recommend that you calculate the dose, total dose, as per the weight, though it is not mentioned. But my suggestion is that you give that much dose so that it will not be causing the hypervitaminosis also. Let us say it's a 10 kg baby. Now in a 10 kg baby, you have to give how much per day? 2000 units per 2000 units per day for 3 months. How much will be there? 2000 units per day per month का कितना हो गया? 60,000. 60,000. You have to give it for 3 months. कितना हो गया? 1,80,000. So 1,80,000 you can give it over a period. You have एक सैचेट कितने का आता है? 60,000. तो आप 60,000 यूनिट्स को आप उसको 3 सैचेट दे दीजिए. उसके बाद में you can send the child safely. I don't find this is a good way of treating the patient with the vitamin D. ठीक है? Okay. आपने टोटल डोज बना लिया, आपने उसको टोटल डोज 3 दिन में पूरा कर दिया. That's all. अर्लियर हम क्या करते थे, हम 6 लाख यूनिट्स देते थे सबको, तो 60,000 यूनिट्स फॉर 10 डेज. दैट इज ओनली समटाइम इट मे कॉज हाइपरविटामिनोसिस डी, बट आप उसकी डोज कैलकुलेट कर लीजिए, उसको दे दीजिएगा. दैट्स ऑल. लगातार 3 दिन दे सकते हैं? दे सकते हैं. 60,000 यूनिट का एक रोज का भी तो मैं बोल रहा हूँ. पहले तो हम उसको 10 दिन देते थे. हाँ, तो आप दे सकते हैं. आप 3 दिन दे दीजिए, खत्म कर दीजिए. ठीक है? ओके, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच.